Good morning to all of you. Am I audible? Visible to all? Very good morning, everyone. Is clear, audible, visible? Aji ଗୋଟେ ବହୁତ important topic ଉପରେ ଆମେ discussion କରିବା on social justice. Now, social justice ଆପଣଙ୍କର GS paper 2 ରେ ଆସୁଛି. ଯୋଉମାନେ civil service examination ପାଇଁ prepare ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଇଏ GS paper 2 ର ଗୋଟେ part. Indian polity, constitution, governance ସହିତ social justice ର topic ଆସିଥାଏ. So ଆମ ଆଜିର topic of discussion ଅଛି constitutional provisions of social justice. Constitutional provisions of social justice definitely ଆମେ discuss କରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛି important concept ବୁଝିବା ଦରକାର. What is social justice and what is the relevance of social justice? ଏମିତି କିଛି point ଉପରେ ପ୍ରଥମେ discussion କରିବା ତାପରେ ମୁଁ ଆସିବି constitutional dimension. କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି in the meantime ପଚାରି ପାରିବେ. Audible, visible ସମସ୍ତଙ୍କୁ clear? Okay. प्रथम देखिए व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस कहला हम कोन बुझी जस्टिस गोटे टर्म आसी जस्ट गोटे आसी जस्टिस कम्स फ्रॉम अ वर्ड जस्ट ना जस्ट टू आसी सोशल जस्टिस. जस्ट मींस फेयरनेस इक्वालिटी अमंग ऑल दैट इज जस्ट है. तो सोशल जस्टिस बेसिकली तीनटा पॉइंट ऊपर फोकस करे. गोटे ला रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिकॉग्निशन एंड रिप्रेजेंटेशन. कोन कहले रीडिस्ट्रीब्यूशन? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? ये कौन redistribution of the resources that we have. कौन कहली? It is all about equal distribution of resources as well as opportunities. तो आम जो देखिए मत कहतु इंडिया जी रिसोर्स अच्छी इकोनॉमिक्स जो मैंने पढ़ी कही पारे एवं इंडिया रे अपॉर्चुनिटी ये कौन इक्वाली समस्त इक्वाली इक्वाली डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स इज इट इक्वाली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल? यदि हम देखा इंडिया 90% रिसोर्स 90% रिसोर्स 10% लोकों पाखरे 10% रिसोर्स 90% लोकों पाखरे अछि हैला. यदि हम गिनी कोएफिशिएंट देखिबा गिनी कोएफिशिएंट इज वेरी हाई इन इंडिया. देयर इज इनइक्वालिटी. देयर इज इनइक्वालिटी. साउंड तो बहुत अधिक अछि. आई हैव ऑलरेडी चेक्ड. मेजर गुड मॉर्निंग पीयू, यू कैन चेक योर साउंड. साउंड बहुत अधिक अछि. चेक करछु मोले. Others clearly audible? Anyone को clear सुना जाउछि? Is that? Is this clear? Is that? Okay. चलो हम देखले कोन ना इंडिया 90% resource that is with 10% people and 10% resource is with 90% of people. हैला. चला को कहले हम there is a redistribution or we can say equal distribution of resources and opportunities. याकू social justice को आ जाए. Then recognition. Recognition and respect को मानको पई ना recognition and respect required for the minorities. कहा पई कहली recognition and respect it is required for the minorities. Minority मानको पई respect को मध्य social justice को आ जाए. Recognition को आ जाए. माइनॉरिटी जोड़ा को माइनॉरिटी कल्चर अच्छी माइनॉरिटी आइडेंटिटी अच्छी ये सब को एक्सेप्ट करिया पहुंच. दैट इज द मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस. रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन कहार ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन ऑफ द वल्नरेबल पॉपुलेशन. नाउ ये वल्नरेबल किए मार्जिनलाइज्ड को माने डिफरेंट ग्राउंड रे हमें मार्जिनलाइजेशन को डिफाइन करि परिबा. जदि मु कहबी ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर ग्राउंड रे हमें क्लासिफाई कले दिस इज द वुमेन प्लस थर्ड जेंडर हैला. देन मु जदि एज वाइज क्लासिफाई करिवि एज वाइज देखले कोन हो
एज वाइज देखले ओल्ड एज पीपल प्लस चिल्ड्रेन, ओल्ड एज प्लस चिल्ड्रेन, बुझे कि नहीं। देन आउ कौन लिखी जेंडर देखिले, एज वाइज देखिले, आम जदि कास्ट वाइज देखिबा ताहले वी कैन टॉक अबाउट एससी एंड ओबीसी। इन टर्म्स ऑफ जदि मु आइसोलेशन कहबी, दिस इज द एसटी पॉपुलेशन। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस कहबी, फाइनेंशियल स्टेटस, देन मु कहि परबी ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इन टर्म्स ऑफ different ways are also there, मु कहि communal riots ground रे हम डिफाइन करि परिबा, those who are the victims of communal riots like the Kashmir Pandits, then chronic disease, those who are suffering from chronic disease or physically challenged, जो माने PWD बाधा को हम दिव्यांग बोली कहूचे, ability अनुसार, in terms of ability, so these are the vulnerable section of the society। तो आपन को सोशल जस्टिस रो पूरा सिलेबस यार ऊपर ही रिवॉल्व कर, पूरा सिलेबस कह दिले, एंटायर सिलेबस ए टॉपिक मान को ऊपर रिवॉल्व कर, बुझे गला। ताले सोशल जस्टिस रे हम कोन पढिवार अछि, इज दिस क्लियर। सोशल जस्टिस रे कोन पढिवार अछि, इज दिस क्लियर हैला। तो दिस इज द सिलेबस, सिंपली दिस इज द सिलेबस ऑफ योर सोशल जस्टिस टॉपिक। ताले सोशल जस्टिस कोन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, तीनटा कंपोनेंट को हमें फोकस करूचे, दैट इज द रिडिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सेकंड इज recognition and respect for different culture, different identity। देन हम एटी देखुचे रिप्रेजेंटेशन कोन ना, डाइवर्स वॉइस इन डिसीजन मेकिंग, डाइवर्स वॉइस इन डिसीजन मेकिंग। ताले सोशल जस्टिस मूवमेंट इंडिया रे पूर्वरु केबे स्टार्ट हिची ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट सोशल जस्टिस। प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड रे मध्ये हमको सोशल जस्टिस मूवमेंट हमको इंडिया रे देखिया को मिलछि। इफ पर्टिकुलरली आई विल टॉक अबाउट द 19th century, there are different social reformers like Raja Rammohan Roy, Jyotirao Phule, Savitribai Phule, so they tried to change the caste system, they advocated for social justice। freedom struggle समय जदि हमें देखिबा, social justice was the central theme। Mahatma Gandhi advocated for non-violent resistance against the British colonialism, against social injustice, against social injustice। post independence time period पर 1947 पर हमको कौन सोशल जस्टिस रो मूवमेंट इंडिया रे देखिया को मिलछि, जदि हम देखिबा 1947 पर मु डिस्कशन करथिल ऑलरेडी 1967 का। 1967 रे नक्सलबारी विलेज कोडीडा इंटरनल सिक्योरिटी डिस्कस करछि। नक्सलबारी विलेज कोडी ना वेस्ट बंगाल रे, एठी गोटे मूवमेंट स्टार्ट हला, मूवमेंट स्टार्ट हला का भीतर ना, बिटवीन द रिच एंड पोर, between the haves and have nots, का भीतर कहल between the haves and have nots, बुझे गला। ये मूवमेंट स्टार्ट हला नक्सलाइट मूवमेंट। सो ये कहीं के स्टार्ट हला, बेसिकली इट वाज अ क्लास स्ट्रगल बिटवीन द रिच एंड द पोर। ये रिच और पोर भीतर एक क्लास स्ट्रगल स्टार्ट हेतला। सो नक्सलाइट मूवमेंट कोंतु, दलित मूवमेंट कोंतु, दलित मानकर डेवलपमेंट पई, बा वुमेन्स मूवमेंट कोंतु इंडिया रे, एलजीबीटीक्यू राइट्स कोंतु हैला। post independence time period, these are the social movement reforms related to social movement or social movements related to ensuring social justice। ताले हम देखिबा किछि लॉ, किछि रेगुलेशन जो माने सोशल जस्टिस एन्श्योर करछन इंडिया रे, कोन कहले किछि लॉज एंड किछि रेगुलेशंस दोज व्हिच आर एन्श्योरिंग सोशल जस्टिस इन इंडिया। किए ना, फर्स्ट होती द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डेफिनेटली हम डिस्कशन करबा या पर आज। एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ मैट्रोसिटीज एक्ट 1989, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये फूड सिक्योरिटी एंश्योर करछि टू ईच एंड एवरीवन। फूड सिक्योरिटी इज आल्सो पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस, कहेंगे ना, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स, दैट आल्सो एंश्योर सोशल जस्टिस। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जहाँ द्वारा आर्टिकल एटा कोन बर्तमान इंक्लूड होय इन आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, Forest Rights Act. So these are the laws or the regulations for social justice in India। तापर हमें देखियो व्हाट इज द कंटेम्पररी डेफिनेशन। बर्तमान हमें सोशल जस्टिस कहले इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे कोन बुझी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस।
contemporary time period. So it is not only about how the things are distributed. This is not only about the distributive justice, means the resource distribution among all the section of society. So there are different approach to social justice, Marxist approach, feminist approach. So they give importance on social justice as well. Karl Marx जन social thinker थे. सी कौन theory देले, सी कहले कि society moved towards various historical stages of development. There is class struggle. It was the feature of all the societies. So when classes society is achieved, that humans can fulfill their true potential and gain freedom. केतेबेले now when there is a classless society. का पर फोकस कले कार्ल मार्क्स कोन कहले एटी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी कोन कहउची, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी कोन कहउची ना क्लासलेस सोसाइटी. बुझला क्लासलेस सोसाइटी. And so there is no class. It means there is equality. There is equality. All are equal in terms of your economic resource. हाँ कि नहीं? ताले मते कहले एई भलिया मूवमेंट हमको कोड देखिया को मिलछि. ताले कहले एई भलिया मूवमेंट हमको सब कोड देखिया को मिलछि. थ्रूआउट द वर्ल्ड ए टाइप रो मूवमेंट हमें देखिछे मार्क्स जहां पर डिस्कशन कले. कोडी रशिया रे देखिया को मिलथिला जोडा को हमें यूएसएसआर बोली कहउतले, सेम टाइप ऑफ मूवमेंट देखिया को मिलथिला. इंडियन कॉन्टेक्स्ट जदि हम देखियो ऑलरेडी मूवमेंट स्टार्ट हेछि 1967 नु नक्सलवाड़ी विलेज रा कथा कहले एलडब्ल्यू जहार उदाहरण. सो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव कोन कहउछि, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ये बेसिकली पैट्रियार्कल सिस्टम ऊपर कहउछन. सो पैट्रियार्कल सिस्टम मींस ये कहया कथा कि ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर women are under respected, they are not recognized, they are not recognized. So it talks about more women's participation, more women centric development or gender centric development. 1948 रे गोटे डिक्लेरेशन आसला जहा को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बा यूडीएचआर. यूडीएचआर कहला इक्वल एंड इनएलिएनेबल राइट्स फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ ह्यूमन फैमिली. कोन ये कहउची इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन. ह्यूमन फैमिली मींस बोथ फॉर बोथ द जेंडर्स, फॉर बोथ द क्लास, फॉर ऑल द कास्ट. इनएलिएनेबल माने इनसेपरेबल, जो राइट्स को सेपरेट करा जाय परिबो ना, इक्वल राइट्स. सो देयर इज अ डॉक्यूमेंट, the role of the United Nations, social justice in an open world, role of the United Nations 2006 रे आसला ये डॉक्यूमेंट. ये फोकस करूची डिफरेंट डोमेन्स ऑफ सोशल जस्टिस. ये तीनटा इंपोर्टेंट डोमेन पर फोकस करते दैट इज इक्वालिटी एंड इक्विटी एंड राइट्स. कोन कहले इक्वालिटी, इक्विटी एंड राइट्स. इक्वालिटी, इक्विटी आ गोटेला कोन कहली राइट्स बा अपॉर्चुनिटीज. आमे देखिबा गोटे पर गोटे डिस्कशन करिवा. फर्स्ट देखिबा इक्वालिटी ऑफ राइट्स. नाउ व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ राइट्स? What is equality of rights? It means everyone has the same type of rights. So it represents the most fundamental form of equality. It involves elimination of all forms of discrimination. कौन कहूँ all forms of discrimination. Respect for fundamental freedom. कौन कहली respect for fundamental freedom. Civil political rights. Everyone is equal. Everyone has equal voting rights. Everyone is entitled to all the rights, all the freedoms, without any type of discrimination on the basis of race, color, sex, language, religion, political or other opinion or nationality. कौनसी भी ग्राउंड रे ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, all are equal. That is equality of rights. Equality of rights for everyone. Then equality of opportunities. Equality of opportunities ର अर्थ ये कहा पर फोकस करछि ना stable social, political, economic, cultural atmosphere. So there should not be any discrimination political field रे. जदि हम देखिबा discrimination exist करछि कि नहीं? Yes, discrimination exist. Politics रे केमि discrimination अछि के कोइ परिबे? Discrimination. Socially discrimination अछि कि नहीं? Social discrimination, yes. On the basis of caste अछि, on the basis of gender, social discrimination अछि. Political अछि कि नहीं? Only rich are influential.
इन पॉलिटिक्स समस्त कौन पॉलिटिक्स रे पार्टिसिपेट करि परछन ओनली रिच और आई कैन से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देन इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन अछि रिच वर्सेस पुअर कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन अछि आइडेंटिटी क्राइसिस identity of minority. So these are different types of discrimination that exist in the Indian society. So you could say equality of opportunities for all, for everyone. Clear? Then second point को आसीबा equality in living conditions. यार अर्थ कौन? Equality in living conditions यार अर्थ कौन? So access to equity, access to basic requirements. कोठी के access दरकार हम? ना हमको access दरकार access to health, equal access to health, equal access to education, equal access to politics, equal access to economic resources. मुझे कि नहीं access to justice, access to justice. These are the access which are required for everyone. So everyone needs such type of access. Okay. ताले हमें तापर देखिया सोशल जस्टिस रो बेसिक जानी गला हमें कि व्हाट इज सोशल जस्टिस हम पाखरे गोटे बेसिक आइडिया आसी गला कि सोशल जस्टिस कोन एबे हमें देखिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सो एठी हमें देखुचे देयर इज एलोकेशन ऑफ बोथ मटेरियल एंड मोरल एडवांटेजेस इन सोशल लाइफ ताल कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव मते कोन कहले इन द प्रिएम्बल इट इज मेंशन्ड एनीवेयर इज इट मेंशन्ड अबाउट जस्टिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सी जगह जस्टिस ऊपर मेंशन है कि इन एनी प्लेस जस्टिस लिखा है कोटी कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है फर्स्ट कौन yes or no yes mentioned कोडी preamble very good preamble को justice ना ये मेंशन करते सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस social economic political justice ये कोती they should go in hand with hand कौन पॉइंट to ensure life of dignity so neither economic equality nor political democracy alone can give dignity कौन कहली economic equality political democracy दीटा जाक दरकार इकोनॉमिक इक्वालिटी आ गोटे कौन कहली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ये दीटा दरकार ना गोटे दरकार डेफिनेटली दीटा जाक हमको दरकार इकोनॉमिक इक्वालिटी रे ये कौन करिवो ना ये जो गैप बिटवीन रिच एंड पोर ये ताको रिड्यूस करिवो reduce the gap between rich and poor. Political democracy, it will increase equal participation. It will increase equal participation for all. है equal participation ensure करियो समस्त को पाई. So both are required. ताले constitution रो रोल एटी कोन? Constitution of India यार exact role कोन? It ensures equality, ensures constitutionalism coach, ensures constitutionalism. Now constitutionalism is important aspect of justice. What is constitutionalism? There is a difference between constitution and constitutionalism. Constitution is simply a set of rules regulations जेमते हमें constitution of India देखुचे किछि गोटे rule regulation लिखि देले हमें तो कहि परिबा दैट इज द constitution. Now what is constitutionalism? Constitutionalism respects rule of law. कौन कहली it respects rule of law. मैं कहबा supremacy of law. कौन कहली supremacy of law is there.
no one is above the law, that is supremacy of law. Then we have judicial review. Judicial review. Jodi ame dekhiba executive, judiciary, legislature, no one has their own authority. Rather, all of them, they derive their authority from the constitution only. They derive their authority from the constitution only. तब हम कहूँ judicial review. बुझेला? Same thing मुझे security forces. Security forces, they are also subject to the rule of law. जेमती हम देखते हैं AFSPA misuse, Armed Force Special Power Act misuse करा जाता है कोडी. In the disturbed regions of Jammu Kashmir, northeastern states, where women were raped, molested, there was fake encounters. So there are a lot of cases involved in the Supreme Court of India, plus many committees like Justice Jeevan Reddy Committee, Justice Santosh S Committee. They have confirmed there is a gross violation of human rights in the disturbed regions. There is misuse of AFSPA, or अनेक गोटे फेक एनकाउंटर केस रे देखागला कि फेक एनकाउंटर केस रे देखागला कि देयर इज ओवर यूज ऑफ फोर्स, सिक्योरिटी फोर्स or there is over use of forces. So fake encounter देखने को मिला. So that's why no one is above the law. All are equally amenable. All are equally subject to the rule of law. The supremacy of law, judicial supremacy is there. है ना? ऐको हमें कहले this is the part of constitutionalism. So in India we have constitution as well as constitutionalism. बुझेला? Constitution as well as constitutionalism. ताले India रा constitution कहाँ पर focus करूँची? Now whether Indian constitution commits for individual freedom or not? The answer is yes. Individual freedom is there. Individual freedom in terms of कोट देची नहीं हमको हिची fundamental right रे कौन देची fundamental rights. Fundamental right रे mention हिची about individual freedoms. आउ कौन देची केवल individual freedom कथा कौन? Individual freedom सहित ये cooperative freedom बात हमको group freedom कथा कौची. जो human rights हमें देखुचे human rights, there are different types of human rights. Socio-economic human rights, civil and political human rights, or like collective human rights. Collective human rights में right to environment. It is collective environment required for all. Civil and political यदि हम देखिए like your freedoms, socio-economic रे यदि हम कोई hunger, malnutrition एक सब reduce करें, है ना? So these are different types of तीन प्रकार human rights मन रखिए, तीन प्रकार human rights as per UDHR, Universal Declaration of Human Rights अनुसार, है ना? तो लेकिन हम देखो चे यदि Indian Constitution देखिए in the Indian Constitution there are different concepts related to equality, fairness, dignity. So it shows access to opportunities, rights, irrespective of the caste, religion, gender, you have certain rights. That is equality. That is equality which is ensured to you. So the Constitution of India ensures social justice as the foundational values. ये केवल एतिक नुहे, या सहित क्लाइमेट जस्टिस मध्य अछि, एनवायरमेंटल जस्टिस मध्य अछि. केमति अछि हम देखिबा वर्तमान. Key provision देखिबा Constitution. What are the key provisions of the Constitution where it is mentioned about social justice? The first is preamble. The preamble of the Constitution, it declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Plus to ensure justice. What type of justice? Social, economic, political justice. ये कथा mention है कि नहीं preamble. कल justice ऊपर कोड mention है हमें देखले ना in the preamble. First. Second is fundamental right. Fundamental right के कोड in Article 14 रो Article 18. Article 14 रो 18. 14 guarantees equality. कौन ये कोची? Equality before law, equal protection of law. Article 15 prohibits discrimination based on religion, race, caste, sex, place of birth. 16 prohibits equality of opportunity in public employment. ये अपन सहित discrimination but discriminatory practice करी परिवे नहीं in case of public employment. 16. 17 untouchability prohibition. Title use करी परिवे नहीं, abolition of title 18. ये वाला फंडामेंटल राइट्स कथा. तापर हम आसीबा डीपीएसपी रे कोन मेंशन अछि. अच्छा फंडामेंटल राइट रे आहुरी भी जस्टिस अछि, जेमति कि हम कहि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19. फ्रीडम
कौन पाई ना फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन freedom of speech and expression article 19 another important article 21 right to dignified life right to a dignified life dignified life includes a sufficient life dignified life means a sufficient life equal opportunities full of opportunities equal participation for all equal participation for all ये वाला article 21 ना कथा so the 21A right to education कोई right to education now 21 includes right to public health को ensure करिया ପାଇଁ कहूची speedy trial speedy justice right to electricity now what are other freedoms other justice मुझे आउ किछि important rights पर कहूची right to मते को right to love marriage एटा कोठी आछो को आर्टिकल आछो right to love marriage right to electricity now electricity is basic essential it is required right to internet speedy trial कथा कहली already access to clean environment ये सब कोठी आसीबे ये सब गुडा का आर्टिकल 21 अंडर आछथि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आछथि कोठी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी रे गुडा का मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट कौन कहले राइट टू लव मैरिज इट इज अ राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ right to electricity internet basic requirement supreme court कहले these are the basic requirements speedy trial clean environment it is a collective human rights it is a personal human rights it is a personal right speedy trial है ना तापर हम देखिबा सेमती you have religion based rights 25 to 28 minority rights 29 30 most important right which ensures all other rights is the writ article 32 article 32 आपको कहते हैं heart and soul of Indian constitution this is called heart and soul of why कहीं कहते की कहले by Dr. B.R. Ambedkar की कहले by Dr. B.R. Ambedkar कहीं कहते हैं heart and soul because it is all about writ petition writ रे by using 32 you can approach the Supreme Court when there is a violation of rights रो violation होले कौन हो violation of rights you can approach Supreme Court कौन by to restore the rights है ना ମୁଁ कौन कहली violation of rights restore करिया ପାଇଁ you can approach the Supreme Court by using 32 that is a writ petition now the same opportunity you have by using article 226 you can approach the high court also but Supreme Court jai paribo only for fundamental rights only for violation of fundamental rights part 3 high court jai paribo both for fundamental rights as well as for legal rights so which writ making power is broad high court ro na Supreme Court writ making power ta अधिक कहार high court रो ना Supreme Court है ना ये गला हमें फंडामेंटल राइट्स कथा देखले फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट योर बेसिक राइट्स against the unnecessary encroachment of the state means the state cannot unnecessarily interfere in your personal rights है ना so that is through your fundamental right the next is DPSP part 4 it ensures socio-economic rights article 36
it directs the state to ensure a social order to promote justice in all sphere. Social order and justice promote करिया पई ये कहूची कोन कहली social order and justice promote करिया पई कहूची कि article 38 justice for all. Social order means all are equal. कोन कहूची all are equal. ହେଲା article 39 equal access to livelihood, resource and opportunities, most important. Equal access to livelihood यारी ऊपर बेस करके you have मनरेगा महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act, 100 days of work, 100 days of legal right to work, resource ro equal distribution for everyone, opportunities ro equal distribution for everyone. So it mandates policies which ensure equal access to livelihood, equal resource and equal opportunities for all. Opportunities for all. Then article 41, it directs the state to provide public assistance in case of unemployment, old age, sickness, disability. तमाने ये जो कंडीशन गुड़ा का में देखिले ई मानकर सोशल जस्टिस वायोलेशन हुए नहीं, ओल्ड एज कथा कहली, अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन कथा कहली, सिकनेस कथा कहली, डिसेबिलिटी कथा कहली, ई मानकर राइट्स वायोलेशन हो नहीं? Yes or no? Yes. There is a clear cut violation of rights of these people, those who are suffering from unemployment, तो माने ओल्ड एज रे अच्छा, सिकनेस, डिसेबिलिटी जो मानकर अच्छे से मानकर बुझेला. ताले ये कुछ डायरेक्शन टू द स्टेट to formulate a policy law related to this. 46, educational economic interest of SC ST community and other weaker section. Other weaker section ता माने ये कौन कहूची? Educational interest, education provide करिया ପାଇଁ कहूची. ताले जो पार्ट 3 रे भी हमें पढ़िले राइट्स, पार्ट 4 रे भी पढ़ले, डिफरेंस कौन? पार्ट 3 रे भी पढ़िले, पार्ट 4 रे पढ़िले. पार्ट 3 रे we talked about fundamental rights and this is DPSP. This is enforceable. This is not enforceable. यार अर्थ, if there is violation of fundamental right, you can approach the Supreme Court or High Court. That is enforceability. कोर्ट की जाई परियो, रीट फाइल करि परियो अंडर आर्टिकल 32 or 226. एठी रीट फाइल करि परियोनी, नो रीट, because they are not enforceable. Because they are not enforceable. बुझेला डिफरेंस टा कोन? They are simply directives. Directives माने instructions. They are simply instruction. कहा को? These are simply instruction to the state. है ना? Now एगुड़ा कौन? Fundamental rights कौन? ना they are obligations to the state. Obligation माने state मानिवा को बाध्य. State मानिवा को बाध्य. न मानिले कोर्ट चुवा state. You can file a case against the state. Now these are simply directives. These are simply instructions. These are simply instructions to the state. कौन state मानी पारे न मानी पारे. एठी मानिवा ପାଇଁ state बाध्य. बुझी होची? तो ये DPSP को जेहेतु माने सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को एंश्योर करूचंदी, ये DPSP को नॉट एनफोर्सेबल काई करा जाय छै? एनफोर्सेबल भी हम करि परथान, एनफोर्सेबल करि परथान. एनफोर्सेबल कले प्रॉब्लम कोन हो? एनी आइडिया? एनफोर्सेबल कले गवर्नमेंट पाखरे सेति के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थिवा दरकार ताको एनफोर्स करिया पई. सो इट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. Depends on economic strength of, depends on the economic strength of the government. बुझेला? सेत पे याकू एनफोर्स करा जाय नि, एनफोर्सेबिलिटी थ्रू रखा जाय. यू कैन नॉट एना टिके कोन गवर्नमेंट न देला तुम डायरेक्टली विल अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट and you will make it obligatory obligation on the government. So that's why it is not there. Now beyond article 4, sorry, part 4a, part 4, there are certain other rights also, justice also. Part 4a, part 4a कहूची to promote harmony, to protect heritage, to develop a spirit of inquiry, reform,
and contributing to social justice. कोन कहूची you should contribute to social justice. This is a duty, fundamental duty. Now through part 3, through fundamental rights, you are enjoying your rights. You are enjoying your rights. Through DPSP, this is the responsibility of the state. This is the responsibility of the state. This is obligation of the state. Obligation of state. Now while enjoying our own rights, while enjoying our own rights, while putting responsibility and obligation on the state, simultaneously we have to discharge certain duties. आमर किछि duty भी अछि कि नहीं? Discharge duties towards what? You have to discharge duties towards others or society. हैला एको में कोन को? This is called fundamental duty, part 4A. जेतले हमें आमर राइट्स एंजॉय करूछे, जेतले हमें डीपीएसपी थ्रू रे रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ द स्टेट ऊपर डिस्कशन करूछे, साइमल्टेनियसली आमर मध्य किछि ड्यूटीज अछि, रेस्पोंसिबिलिटी अछि टुवर्ड्स द स्टेट, जोटा फंडामेंटल ड्यूटीज रे डिस्कशन है. नाउ इज दिस क्लियर? कैन यू राइट? या पर क्वेश्चन आसीता लास्ट टाइम ओपीएससी परीक्षा रे मेंस एग्जाम रे या पर क्वेश्चन आसी छि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ सोशल जस्टिस. बुझी होछि ना बुझी होन? कोन बुझी होछि ना नहीं? Is this clear everyone? बहुत स्लो जाउछे और टू द पॉइंट जाउछे, जहा जहा अछि कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन को टच करके जो पॉइंट ऊपर क्वेश्चन आसीबो परीक्षा रे, से पॉइंट को हम फोकस करछ. क्लियर? ओके. पीहू, प्रतिमा, ईस्तर, आउ किछि पॉलिसीज को आसीबा. गवर्नमेंट पॉलिसीज व्हिच एन्श्योर्स सोशल जस्टिस इन इंडिया. किछि पॉलिसी ऊपर डिस्कशन करबा जे सोशल जस्टिस एन्श्योर कर, जेमति कि रिजर्वेशन पॉलिसी. नाउ इज रिजर्वेशन पॉलिसी अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट? द आंसर इज yes. Yes, it is a constitutional mandate. So reservation in education, employment, legislature for SC, ST, OBC. किते 15(4), 15(5), 16(4), 16(4A. ये मानक पाए. In the same way, it is also there for EWS, economically weaker section. Economically weaker section. एटो रिजर्वेशन दिया जाउची. ए रिजर्वेशन ना दुई प्रकार थाए. गोटेला हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, आ गोटेला वर्टिकल रिजर्वेशन. Horizontal and vertical reservation. Now what is horizontal, what is vertical? पढ़िथि आकम भाबु छ. Horizontal हमें कोन देखछि ना among different groups, among different groups. Example for SC, ST, OBC हैला. Vertical ले कोन ना inside the group. Inside group रे हमें कोन देखछि ना, फॉर एग्जांपल मु कहबी रिजर्वेशन टू वुमेन, रिजर्वेशन टू पीडब्ल्यूडी. कोन कहल रिजर्वेशन टू वुमेन एंड रिजर्वेशन टू पीडब्ल्यूडी. एटा कहा भीतर आसीबो? एटा कहा भीतर आसीबो? सॉरी एटा उल्टा कहतली. वर्टिकल्स गोट सेकंड रो. वर्टिकल रे वर्टिकल टा among the different groups. वर्टिकल माने कोन? हायरार्की अछि. हियर हायरार्की एक्जिस्ट. देखो एटा आउथर को हायरार्की
exist hierarchy exists माने मु कहली कि different caste group SC ST OBC ए basis horizontal inside that मु कहबी women reservation PWD reservation तुम्हारा ex serviceman reservation ये सब horizontal आसी बुझी जो परीक्षा दौच यूपीएससी ओपीएससी परीक्षा दौच एटी केमती देखा जाए एटी कौन देखा जाए यूपीएससी ओपीएससी परीक्षा रे ये परीक्षा रे देखा जीवो जे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देले एठी कि जे जो ग्रुप को बिलोंग करूची तार रिजर्वेशन ना सी ग्रुप रो हम 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन मन कर एससी पई टोटल पोस्ट अछि 20 टी एटी वुमेन केते 1/3 कहला ताने 20 रु 1/3 वुमेन जी पीडब्ल्यूडी धर टोटल अछि चारटा ये चारटा को डिवाइड कर देला यूआर गोटे ओबीसी मन कर गोटे एससी गोटे एसटी गोटे ताने ये एससी गोटे कोड जीवो एउड जीवो ए हायरार्की रो जीवो बुझिला सो ये वुमेन टा कोड जीवो ये वुमेन टा सबुतिर रहिबे 1/3 रिजर्वेशन माने 1/3 रिजर्वेशन फ्रॉम यूआर 1/3 फ्रॉम ओबीसी 1/3 एससी 1/3 एसटी टोटल रु सबुतिर 1/3 पड़े बुझिला रिजर्वेशन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पॉलिटी क्लास रे आपरे आवधिक देखियो so we have reservation policies for EWC as well 15.3 special provision for women and children for welfare abolition of exploitation article 23 and 24 human trafficking को ये prohibit करिया को post labor को prohibit करछि child labor को ये prohibit करछि हला okay now is this clear clarity आसुछि constitutional provision कोन अछि is there any constitutional provision for Brahmins to serve in the temple? Why they are reserved in temple? No, there is no constitutional, neither constitutional provision. Rather, there is any law which ensures the Brahmins will worship in the not only in the Hindu religion, in every religion there is a particular group, caste group, particular community, those who take the authority of worshipping. Now there is no law, there is no constitutional mandate. Even in many metropolitan cities, temples are open to everybody. Anyone can go and worship. Now this is the rule, this is the law, this is what the constitution says. This is the right to equality. So there is no reservation. बुझेला एटी कौन से रिजर्वेशन नहीं रादर इट इज अ सोशियो कल्चरल प्रेसिडेंट जाको यूज करा जाउछ या पे कौन से प्रकार लीगल फेनोमेना बा लीगल प्रेसिडेंट नहीं नेक्स्ट टाइम देखियो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हम पाखरे कोन अछि जुडिशियल प्रेसिडेंट माने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ए लाइट रे कोन कहउछन ए पर्टिकुलर पॉइंट ऊपर कोन कहउछन हम देखियो केशवानंद भारती केस ये कुछ सोशल जस्टिस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ना बेसिक स्ट्रक्चर कोन हम पढ़ी सरचे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस रे पढ़ी चंदे तो ये कोन कहउछन सोशल जस्टिस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इंदिरा साहनी केस 1992 रे आसला ये कुछ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट so it is a tool of social justice it promotes participation opportunities kon kurchi participation opportunities ये सब को प्रमोट करछि बुझेला इंदिरा साहनी केस कहि तापर हमें देखिबा सोशल जस्टिस को अचीव करिया इंडिया रे प्रॉब्लम कोन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन अचीविंग सोशल जस्टिस इन इंडिया प्रथम इंपोर्टेंट पॉइंट होची इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अनेक गुडे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऊपर हमें पढ़िले दो दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दे प्रोवाइड सेफगार्ड्स इकोनॉमिक डिस्पैरिटी स्टिल परसिस्ट and it affects access to basic rights like education and healthcare कौन करबो ये कहली ये एजुकेशन और हेल्थ केयर ऊपर मध्य इंपैक्ट पकोछ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इट कंटिन्यूज टू इम्पीड सोशल जस्टिस पर्टिकुलरली कोट ना इन द रूरल एरिया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एबे भी एग्जिस्ट करछ we talk about abolition sorry untouchability article 17 still exist gender inequality gender gap wage gap violence against women because of patriarchal society gender justice implementation weak implementation of these policies ये policy मानकर proper implementation ही पाउ बुझेला नहीं clear आ गोटे टाइप ऑफ जस्टिस ऊपर डिस्कशन करबी लास्ट दैट इज एनवायरमेंटल जस्टिस or climate justice
क्लाइमेट जस्टिस कौन जो क्लाइमेट चेंज होची बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज ऑफ कहीं ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज ऑफ emission of different greenhouse gases. Now who are the leading contributors of greenhouse gas किए कर मुझे तो कभी डेवलप्ड कंट्रीज एमाने कंट्रीब्यूट करछन अधिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो कि नहीं सेकंड आउ किए करछन मु कहबी अर्बन एरिया आउ किए करत रिच ना पुअर मु कहबी रिच हो कि नहीं ई तीनटा कैटेगरी एमानकर कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग इज मोर यस और नो यस नाउ यार इंपैक्ट पड़छ अधिक कहा पर ना एलडीसी लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज अर्बन एरिया एमिट करूची अधिक एसी यूज करूची फैन यूज करूची इंपैक्ट पड़छ कहा पर ना रूरल एरिया ऊपर रिच करूची इंपैक्ट पड़छ कहा पर ना पोर ऊपर सेमती मु कहबी करंट जनरेशन क्लाइमेट जस्टिस सॉरी ग्लोबल वार्मिंग करूची इंपैक्ट कहा पर फ्यूचर जनरेशन तमने एमाने होचंदी विक्टिम एमाने हेले contributors to greenhouse gas emission or I can say global warming clear they are the contributors to global warming but देखो responsibility पड़ुची कहा पर माने victim की impact पड़ुची मान को पर बुझिला कि नहीं climate justice रे सिंपल जिनस मु कहया चाहू जेठी climate justice रे developed countries urban area rich current generation they are adding more greenhouse gases to the atmosphere they contribute more to the climate change whereas its impact is on least developed countries rural area poor people as well as the future generation this is how their justice is violated by whom एई मानक द्वारा जस्टिस वायोलेशन होची कहार ए मानकर बुझिला केमती जस्टिस वायोलेशन होची तो ये को जेठी रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग को माने नेबे यार दायित्व ना ए माने नेबे रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग ताले मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी कहार ना ए मानकर अधिक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहबा दरकार एति कथा दिस इज नोन एज क्लाइमेट जस्टिस बुझिला why USA removed withdrew from Paris Agreement very good point from COP kahi ki withdraw karigala because they are developed countries they are already developed their rate of development is maximum industrial development they have already achieved now the problem is they are blaming the developing countries kaha ko blame korchon they are blaming the developing countries for more addition of the greenhouse gases now developing countries like India China they need more industrial development in the current scenario developed countries are already developed so they cannot put a restriction on our development point number 1 point number 2 developed countries they don't want to take the responsibility though they are share to the climate change global warming is maximum they don't want to take the responsibility because once they become a party to any agreement once they become signatory to any agreement or convention international convention they have to make their local laws accordingly लोकल लॉ से अनुसार तैयारी करियो पड़ियो लोकल लॉ को से अनुसार इंप्लीमेंट करियो पड़ियो जेमती क्लाइमेट चेंज होबन सो दे डोंट वांट टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी नवर नहीं दिस इज द रीजन फॉर व्हिच दे आर विथड्रॉइंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वेंशंस इंटरनेशनल कन्वेंशंस and blaming the underdeveloped countries or LDCs or developing countries for more contribution to greenhouse gas as well as to the global warming बुझिला एटा गोटे नुवा दिस इज द न्यू डायमेंशन ऑफ जस्टिस This is a new dimension of justice that is climate justice. यहाँ पर समस्त लिखिए हमें लिखते हैं ना social, economic, political justice. यहाँ पर समस्त लिखिए ए पॉइंट को समस्त ऐड करिए ये बही रे मेंशन नहीं थी एते ताको लेखन बहुत कम जण लेखन तो यहाँ पर मेंशन करिए समस्त social, economic justice पर political justice पर talk about climate justice बुझिएला बा जहाँ को हमें कहते environmental justice any doubt environmental justice so any movement related to environmental justice in India
एनी मूवमेंट इन एनवायरमेंटल जस्टिस गोटे मूवमेंट है चिपको मूवमेंट तार ना सुनी इट वाज लेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन बोलिया को कहा जाए चिपको मूवमेंट सुनिछ कि नहीं कौन करथले से माने जोट से माने गोटे गछ को हक करथले कि नहीं यू आर नॉट अलाउड टू कट द ट्री नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन एपिको मूवमेंट साइलेंट वैली प्रोटेस्ट ओडिशा रे किछि मूवमेंट अछि ओडिशा रे किछि अछि there are so many wars Middle East Ukraine why UN is so silent and not focus on the climate related things good point but ये टॉपिक गुडा ना आईआर आड़ को रिलेट करूची बहुत बढ़िया पॉइंट कहछो या ऊपर ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पचार यार ऊपर मैं गोटे रिसर्च करथिली ऑन हाउ यूएन and the UN organs United Nations and UN organs how they are playing a spoiling role how they are playing a spoiling role to create disturbance in the Middle East. Now in the Middle East if we talk about the Israel-Palestine conflict especially about the Gaza Strip where there is a lot of gross human rights violation of international humanitarian laws there is poverty unemployment molestation rape violation of human rights lot of cases involved in Gaza Strip because of Israel and Palestine war still the UN and the associated bodies they are silent on this they are taking advantages एमाने डेवलप्ड कंट्रीज गोटे दीटा वर्ड रे शॉर्टकट रे यार आंसर दोछि आईआर क्लास रे आउरी बेसी डिटेल डिस्कशन करबा दे आर डेवलप्ड कंट्रीज से माने कहा ऊपर बिलीव करन ना दे बिलीव ऑन आर्म्स डिप्लोमेसी आर्म्स एंड एम्युनिशंस डिप्लोमेसी बुझियला एमाने कोन करबे आर्म्स डिप्लोमेसी रे एमाने बिक्री करबे आर्म्स एंड एम्युनिशंस यदि कंटिन्यू हुए कॉन्फ्लिक्ट ताले एमाने को बेनिफिट सो आर्म्स मार्केट यदि हम देखो दिस इज अ वेरी ह्यूज मार्केट आर्म्स मार्केट एम्युनिशंस मार्केट वेरी ह्यूज मार्केट हैला प्रथम बेनिफिट तांको पाइबे सेकंड दे वांट डिस्टर्बेंस टू बी कंटिन्यूड यदि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट देखिबा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहबी इंडिया इज ब्रेकिंग इंडिया ब्रेकिंग रे फॉरेन कंट्री मानकर इन्फ्लुएंस अछि कि नहीं अछि को मानकर इन्फ्लुएंस अछि मे चाइना रे इन्फ्लुएंस अछि एलडब्ल्यू थ्रू रे चाइना डिस्टर्बेंस क्रिएट करछि पाकिस्तान रो इन्फ्लुएंस अछि या थ्रू ये जम्मू कश्मीर रे मिलिटेंट आउटफिट चलै छै बुझु कि नहीं द नेक्स्ट होछि यूएस रो इन्फ्लुएंस अछि यूएसए कहछि कि इंडिया जो क्लासिज्म चलै छै दैट इज इक्वल्स टू क्लासिज्म कोन ये कहछि इंडिया रो क्लासिज्म इज इक्वल्स टू कास्टिज्म इन इंडिया सॉरी क्लासिज्म इन यूएसए इज इक्वल्स टू कास्टिज्म इन इंडिया सो ये तीनटा कंट्री रे इंटरफेयर करथि इवन यूएसए इज बिलीव्ड टू बी एज पर मीडिया रिपोर्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट जम्मू कश्मीर रे मध्ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करिया पे दे आर प्रोवाइडिंग फंडिंग तो ये डेवलप्ड कंट्रीज माने दे वांट सर्टेन टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड दैट्स व्हाई दे कैन टेक एडवांटेजेस आउट ऑफ इट बुझिए ना दिस क्लियर और बहुत कांसेप्ट अछि ता भीतर आईआर रिलेटेड कहबी के आईआर क्लास हेले आज रो क्लास रे हम डिस्कशन करछे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू एन्श्योरिंग सोशल जस्टिस ना बुझिएला एति कि जो पॉइंट डिस्कशन करले मे बी तुमर 11 रे आउट क्लास थिबो सो वी हैव टू वाइंड अप दिस सेशन रैप अप दिस सेशन as well we have rest 4 minutes किसी क्वेश्चन बुझी पारले कि नहीं मते कोन आज डिस्कशन now social justice is very interesting and emerging topic which is there in your GS paper 2 syllabus GS 2 रे अछि ना तो याको ठीक होवर खाली पढिया दरकार एंड इट इज स्कोरिंग एज वेल जहां क्वेश्चन आसीबो सब स्कोर कर परियो ठीक ठाक तले हम देखले एनवायरमेंटल जस्टिस को पॉइंट ऊपर आज हम फोकस करले हम देखले सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस एनवायरमेंटल जस्टिस ऊपर डिस्कशन करले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केमती प्रोवाइड करछंदी हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एन्श्योर सोशल जस्टिस ता ऊपर डिस्कशन करले बुझियो छी एनी डाउट एनी मोर डाउट यदि क्वेश्चन किछि अछि पचारन अच्छा एटा को समस्त डाउनलोड करके पढ़िबे ए जो नोट्स ता देई जे ए नोट्स ता को समस्त पढ़िबे कोठो टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करि परिबे डाउनलोड करके पढ़िबे जस्टिस कौन लीगल जस्टिस कौन ये सब ये डिफाइन नहीं टाइम मिले पुणी के डिस्कस करी जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस मोस्ट इंपोर्टेंट तीन टा पॉइंट ऊपर फाइनली फोकस करूची जस्टिस रो
जस्टिस रो तीनटा पॉइंट ऊपर फोकस करछि फर्स्ट ला इक्विटी सॉरी इक्वालिटी इक्विटी एंड राइट्स कोन कहली इक्वालिटी इक्विटी एंड राइट्स बुझी गला इक्वालिटी इक्विटी और राइट्स कोन इक्वालिटी इक्विटी और राइट्स कोन बुझी गला ये तीनटा को बेस करके अछि जस्टिस you can mention environmental activist name definitely use kari paribo activist manaka na ethi use kari paribo kono asubidha nahi so eti there is a complete notes please read this jodi doubt aschi tale ame pun discussion kariba next class tale ame dekhle justice different angles of justice like social economic political justice we talked about climate or environmental justice as well कौन कौन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ले टिके मत खाली आर्टिकल मन पके देले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन पढ़िला हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमें कौन पढ़ले टिके खाली कह देले कोड पढ़ले पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 3 रे पढ़ले पार्ट 4 ए प्रिएम्बल बुझला सब क्लासिफिकेशन एससी एसटी कम्युनिटी रो एटा आसीबो केतेबेले कहला एटा तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जदी आसे सेठी आसीबो सब क्लासिफिकेशन फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी एंड प्रिएम्बल जस्टिस रो डेफिनेशन देखिए बुझेला एति कि ना डाउट अछि दिस क्लियर नेक्स्ट क्लास रे हमें आउ कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट मानक ऊपर डिस्कशन करिया जोटी मु जॉन रॉल्स थ्योरी ऊपर डिस्कशन करबी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऊपर डिस्कशन करबी दुटा इंपोर्टेंट थ्योरी मन पकेबे नेक्स्ट क्लास रे कहि देबी कौन कौन कहली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जॉन रॉल्स थ्योरी ये बहुत इंपोर्टेंट एवं यहाँ पर जेहेतु कुछ बुक्स नहीं मटेरियल्स नहीं पढ़िबा डिफिकल्ट बट एटी कंप्लीट मटेरियल्स दिया जाय समस्त को एको डाउनलोड करके पढ़ी पारिबे दिस क्लियर इट इज क्लियर चलो ठीक अच्छे देन दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन लेट्स वाइंड अप दिस सेशन थैंक यू क्वेश्चन रखिथिबे समस्त पढ़ी के आसीबे क्वेश्चन जहाँ पचारियो मते नेक्स्ट क्लास जिते डाउट अच्छे रिलेटेड टू जस्टिस ह्यूमन राइट्स आईआर इंटरनेशनल रिलेशन ए टॉपिक रिलेटेड सब डिस्कशन करबा नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट फ्राइडे अगेन 10 to 11 am बुझेला नेक्स्ट फ्राइडे 10 to 11 am पुन डिस्कशन करिया हम सेम टॉपिक ऊपर थैंक यू